Hello everyone, this is me Maha, your English instructor from tutoria.pk. I hope you all are doing good and are in great spirits. Today we are going to discuss Unit 4 जिसका नाम है First Aid. Let's discuss difficult word meanings before moving on to the explanation of our first paragraph. So first word is injured, जिसका meaning है damaged, harmed या जख्मी. Second word is unwell, जिसका meaning है ill, being in bad health या बीमार. Temporary, which means short term, not permanent, arzi. Fourth word is immediate, quick, फौरी तौर पर. Timely, जिसका meaning है well timed, before a time limit expires या बर वक्त. Sixth word is assistance, जिसका meaning है aid, help या मदद. Seventh word is comprising, जिसका मीनिंग है be composed of, consist या उर्दू में हम इसे कहेंगे मुश्तमिल. Eighth word is techniques, जिसका मीनिंग है a particular method applied to some particular task, यानी एक मखसूस मेथड जो किसी मखसूस टास्क को करने के लिए होता है. Ninth word is critical, जिसका मीनिंग है urgently needed, absolutely necessary या फौरी ज़रूरत. 10th word is victims, a person who is harmed यानी मजलूम. 11th word is lay person, someone who is not a professional person, इसे हम common man भी कहेंगे या आम आदमी. 12th word is administer, जिसका meaning है manage and be responsible for यानी मुनज़्ज़म करना. 13th word is carried out, जिसका मीनिंग है cause to happen और complete successfully यानी पूरा करना या अंजाम देना. 14th word is minimal यानी of a minimum amount, slightest, least या कम से कम. 15th word is equipment, the necessary items for a particular purpose यानी साज़ो सामान. 16th word is First Aid, जो कि हमारा यूनिट का भी नाम है, and its meaning is help given to a sick or injured person until full medical treatment is available, यानी इब्तिदाई तिबी इमदाद. 17th word is range, which means an area in which something acts or operates or has power to control, यानी दायरा कार. 18th word is unconscious, जिसका meaning है not awake and aware of and responding to one's environment, यानी बेहोश होना. Let's move on to the explanation of first paragraph. अब first aid की बात हो रही है. first aid क्या होती है? इब्तिदाई तिबी इमदाद. अक्सर हमारी ज़िंदगी में ऐसा होता है कि गैर मुतवक्के हादसात हो जाते हैं जिसके लिए हम ज़हनी या जिस्मानी तौर पर तैयार नहीं होते हैं. कुछ ऐसे मराहिल आ जाते हैं कि हमें पता नहीं होता कि अब हम इनको डील कैसे करें. मैं मेडिकल टर्म्स में बात कर रही हूँ. अचानक बीमार हो जाना या चोट लग जाना और उस वक्त आपके पास कोई डॉक्टर मौजूद नहीं होता है. उस टाइम पर ये फ़र्स्ट एड काम आती है, ये वाली मेडिकल असिस्टेंस काम आती है. और ये वाली जो तिबी इमदाद होती है, भले ही ये टेम्परेरी है, फुल मेडिकल असिस्टेंस नहीं है, लेकिन ये लाइफ सेविंग साबित होती है क्योंकि फर्स्ट एड जो है वो क्राइसिस मैनेजमेंट में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है. ये क्रिटिकली नीडेड होती है. फर्स्ट एड जो है एक क्विक हेल्प होती है, इमीडिएट मेडिकल हेल्प होती है. और जैसा कि पहले कहा कि ये क्रिटिकली नीडेड होती है, इसकी फौरी तौर पर ज़रूरत होती है और सही वक्त पर अगर फर्स्ट एड दी जाए तो ये लाइफ सेविंग साबित होती है. फर्स्ट एड की रेंज क्या होती है? ये माइनर कट्स और स्क्रैचेस से लेके अनकॉन्शियस पर्सन को भी डील करती है, यानी कि मामूली कट और खराश से लेके जो लोग बेहोश होते हैं उनका भी इसमें ट्रीटमेंट हो जाता है. Moving on to next paragraph and we'll discuss meaning of difficult words first. First word is handling यानी manage. Second word is crisis, which means a time of intense difficulty or danger यानी नाजुक मरहला. Third word is management, which means the process of dealing with or controlling things or people यानी इंतजाम. Tackle
means make determined efforts to deal with, यानी निमटना. Fifth word is emergencies, which means a person with a medical condition requiring immediate treatment, जिसका मतलब है हंगामी सूरत हाल. Sixth word is confidence, यानी freedom from doubt, to believe in your ability. उर्दू में से हम कहेंगे एतमाद. Seventh word is crepes, जिसको हम कहते हैं scratch या खुरचना. Eighth word is avoid, which means prevent from happening, यानी बचना. Ninth word is complications, which means difficulty या मुश्किल. Now let's move on to the explanation of our second paragraph. Second paragraph क्या बताता है कि first aid enables us to take care of minor cuts and accidents which develops a sense of handling emergent situations. Emergent situations means वो situations जो emergency वाली होती है, हंगामी सूरत हाल. First aid हमें उनसे निमटने का knowledge देता है और crisis management की sense हम में आती है कि हंगामी सूरत हाल को tackle कैसे करना है, deal कैसे करना है, और हमारे अंदर self confidence आता है. उस वक्त हम पैनिक नहीं करते हैं कि अब हमें क्या करना है, घबराते नहीं हैं, बल्कि हम पूरे एतमाद के साथ काम लेते हैं. सो फर्स्ट एड में माइनर कट्स की भी टेक केयर करना आ जाती है, और माइनर कट्स यूजुअली तो खुद ब खुद ठीक हो जाते हैं, लेकिन हमें ये चीज़ माइंड में रखनी चाहिए कि उनकी इतनी केयर की जाए कि कोई इन्फेक्शन ना हो, क्योंकि थ्रू वुंड्स, कट्स या स्क्रैचेस जख्म में इन्फेक्शन होना बहुत ईजी होता है. नाउ वील बी गोइंग टू स्टडी सर्टेन स्टेप्स जो कि ज़रूरी होते हैं वुंड की देखभाल करने में. Let's move on to the next paragraph, which is paragraph 3, and discuss difficult word meanings.